Hello students, this is the 14th chapter Ecosystem and Energy Flow. My name is Dr. Inshashi. In the previous part of the chapter, in the previous part of the video, we have been studying about the introduction part. We studied a quite little definition of ecosystem. Ecosystem क्या है? Ecosystem is a self-regulatory and self-sustaining structural and functional unit of nature. We studied this. Tinsley in 1935 coined the term ecosystem. We have studied this. And then lastly, we have studied that ecosystem is too big and too complex. That's the reason it is not possible for one individual to study the whole ecosystem at once. For the convenience part, ecosystem is being divided into two parts. एक है terrestrial and second is aquatic. Terrestrial ecosystem is including forest, grassland and desert, while the aquatic ecosystem means all the lakes, wetlands, rivers and estuaries, then ponds, everything comes in aquatic ecosystem. Then there is also ecosystem can be classified into two parts. We have studied एक था नेचुरल इकोसिस्टम, एक है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. तो नेचुरल इकोसिस्टम में क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम डू नॉट रिक्वायर एनी ह्यूमन इनपुट इन दैट. In other words, they are self-sustainable. While in artificial ecosystem, for example, a farmland, a fish tank, or even a large pond used for rearing fishes require constant input in terms of energy or material. We all know about this. Moving to the next slide. So we have done with this introduction part. In this chapter, we will study analyze the structure of ecosystem in order to appreciate the input, that is the productivity, transfer of energy from food chain, food web, nutrient cycling, etc. and also the output. Output means degradation and energy loss. Then we have started with the structure and function. Ecosystem, first we will study about structure and function. So we have studied about this in the previous part. We already have studied the various biotic and abiotic components of the environment. We know that all these biotic and abiotic components influence each other. Let us now look at this component with an integrated approach and see how the flow of energy takes place in ecosystem. Interaction of biotic and abiotic component result in a physical structure, that is characteristics of each type of ecosystem. Identification and enumeration of a plant and animal species of an ecosystem gives its species composition. Moving to the next slide, we have studied the very much special terms in this video. Biotic and abiotic component refer as a location vary in space and time. The variation due to space results in spatial pattern. There are two types of spatial patterns. And what is this spatial patterns? Spatial pattern means the variation. Space, किसे कितनी space लगती है, कौन सा organism कौन से space में रहता है. Some people live in large space, some organisms lives in small space. So that is a spatial pattern, and this spatial pattern is being divided into two types. पहला है stratification और दूसरा है zonation. Vertical distribution of different species of plants and animal occupying different level. एक बड़ा है, एक छोटा है, एक सबसे छोटा है. Here you can see in the image stratification of plants in forest. What they are doing?
They are occupying different levels, and this is called as stratification. For example, trees occupy top vertical strata or layer of a forest, shrubs the second, and herbs and grasses occupy the bottom layer. Clear with this? Similar stratification is also observed in the open seas. जो ओपन सीज होती है वहाँ पे एस एपीपेलाजिक, मीजोपेलाजिक, बेटीपेलाजिक and benthic zones. Then moving forward, zonation की बात करेंगे तो horizontal distribution of plant, horizontal distribution of plants and animals on land or in water is called zonation. Zonation is observed in aquatic, that is wetland, as well as terrestrial, that is ecosystem, but it is easily seen at the junction of the two. Edges of a large lake or a beach show pronounced zonation in the form of intertidal, littoral, sublittoral zones. If we'll talk about zonation, so first has subtidal channels. These subtidal channels are important habitat for fish at low tide. वो फिशेस जो हाई टाइड्स में एग्जिस्ट नहीं करती, that type of fishes will live in the subtidal channels. They allow good drainage and flooding in mud flats. फिर उसके ऊपर आता है mud flats. Mud flats are rich in invertebrate life, जैसे कि हमारे crabs हो गए, prawns हो गए, are rich in invertebrate life for shorebirds. Algal mat grow here always. Algal mat is a type of fish. Third है low marsh. Low marsh is good habitat for cod grass, insects, herons, and egrets, and the clapper rail. Then comes the high marsh. High marsh supports pickleweed and patches of cod grass, a good habitat for savanna sparrow and clapper rail. This is the division of zonation in wetland. So here we have completed with the two very important topics. एक है स्ट्रेटिफिकेशन, पहले हम लोग स्पेशियल पैटर्न में पढ़े स्ट्रेटिफिकेशन एंड जोनेशन. तो स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब समझा. स्ट्रेटिफिकेशन इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन ओपन सीज एंड एपिलैजिक, मीजोपेलाजिक, बेथीपेलाजिक एंड बेंथिक पेलाजिक. ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें लैंड है, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है. You go on Google and search these words, you will understand, you will saw the image and you will understand. Okay, I'll show you this in the next slide. I'll show you this all types. Then यहाँ पे different words थे हमारे. Edges of a large lake or beach show pronounced zonation in the form of intertidal, littoral, sublittoral zones. See students, I told you that epipelagic, mesopelagic, bathypelagic, abyssopelagic, hydropelagic. तो ये है zones. एपीप्लाजिक जो सीज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे ऊपर वाला जोन जो होता है 200 मीटर्स पे, वो है हमारा एपीप्लाजिक जोन. फिर है मीजोप्लाजिक जोन जो 1000 मीटर्स पे है. फिर है बेथीप्लाजिक जोन जो 4000 मीटर्स पे है. फोर्थ है
एबिसोप्लाजिक जोन जो 6000 मीटर्स नीचे है, एंड लास्टली आता है हाइड्रोप्लाजिक जोन जो 10,000 मीटर्स पे है, और ये वाला जो पार्ट है ये है बेंथिक जोन. दिस इज़ कॉन्टिनेंटल शेल एंड दिस होल इज़ कॉल्ड एज प्लाजिक जोन. तो इस तरीके से प्लाजिक जोन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. क्लियर विद दिस स्टूडेंट्स? देन वी स्टडीड जोनेशन. उसके बाद coming to the next slide, the biotic and abiotic components of an ecosystem are all linked together to function as an ecosystem unit through various processes like productivity, decomposition, nutrient cycling, and energy flow. In fact, these are functional aspects of ecosystem. जो हमारा बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के, वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, और वो फिर लिंक्ड होके ही एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं. फिर वो लोग अलग अलग प्रोसेसेस करते हैं. जैसे हमारी बॉडी है, पूरे ऑर्गन्स हमारे बॉडी के एक साथ मिक्स्ड है, फिर वो पूरे मिला के एक बॉडी बनती है. ह्यूमन बॉडी बनी. ह्यूमन बॉडी बनने के बाद हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. वैसे ही हमारा इकोसिस्टम है, बहुत सारे ये जो अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स है वो सारे एक साथ मिल जाते हैं. उसके बाद दे फंक्शन वेरियस प्रोसेसेस, जैसे कि प्रोडक्टिविटी हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड एनर्जी फ्लो. देन any ecosystem must perform these four processes for their sustenance. The ecosystem understand may be as small as a pound or entire biosphere or as a whole. When we study an ecosystem, it can be as small as a pound. पाउंड जितना छोटा होता है उतना ही छोटा इकोसिस्टम, या फिर we can study it and take it as a whole biosphere when we are studying it. It can be as small as a pound or entire biosphere as a whole. The process of productivity involves conversion of inorganic chemicals into organic chemicals with the help of the radiant energy of the sun by the autotrophs and the consumption of the autotrophs by heterotrophs. This is productivity, which involves conversion of inorganic chemicals into organic material, and with the help of radiant energy of the sun by the autotrophs and the consumption of the autotrophs by heterotrophs. The decomposition is, this is what we have studied about productivity. This is the first process. सेकेंड प्रोसेस था हमारा डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल and mineralization of the dead matter. Breakdown of dead organic material and mineralization of the dead matter. This is decomposition. थर्ड प्रोसेस है हमारा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इज द स्टोरेज. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. is the storage and transport of nutrients. Nutrient cycling क्या है? It is the storage and transport of nutrient
minerals released in decomposition process or are used again by autotrophs. The energy flow, ये हो गया हमारा न्यूट्रिएंट, थर्ड पॉइंट हो गया. Coming to the fourth point, fourth is energy flow. Energy flow is unidirectional flow of energy. Energy flow is unidirectional flow of energy from producers to consumers. प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक यूनिडायरेक्शनल फ्लो के मेथड से एनर्जी फ्लो होती है. एंड फाइनली डेसिपेशन एंड लॉस ऑफ हीट. डेसिपेशन मीन्स वहाँ पे रुकती है और वहाँ पे हीट जो है वो लॉस्ट हो गई. तो ये था हमारा 4 पॉइंट्स. पहले प्रोडक्टिविटी, देन डीकम्पोजिशन, देन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, फोर्थ है एनर्जी फ्लो. दिस आर द 4 पॉइंट्स. मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल में, this example is very easy students, just make a little concentration, you will understand. Okay, let's start. Example: think of a small pond ecosystem. Think of a small pond ecosystem. It is fairly a self-sustainable unit that explain the complex interaction which exists in an aquatic ecosystem. एक पाउंड है, तो पाउंड तो ऑब्वियसली एक सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन है एंड विच एग्जिस्ट इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम. वो टेरेस्ट्रियल नहीं है, it is in the form of aquatic ecosystem. Clear with this? A pond is a shallow water body. Pond is a shallow water body in which all the above four aforesaid basic processes of an ecosystem are observed. A pond is a shallow water body in which all the above four aforesaid basic process, what we have studied in the previous slide, of an ecosystem are observed. मतलब चारों प्रोसेस रहेंगे. कौन से हमारे चारों प्रोसेस है? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट cycling and energy flow. The biotic component in water with all the dissolved inorganic and organic substance, and also the rich soil deposit at the bottom of the pond. जो abiotic component कौन सा है? Water है. And with that water, with all the dissolved inorganic and organic substance है, and also the rich soil deposit at the bottom of the pond. The solar input, the cycle of temperature, day length, and other climatic condition regulate the rate of function of the entire pond. ये सारे तो होने ही चाहिए, सारे फैक्टर्स होने चाहिए. सोलार एनर्जी होनी चाहिए, टेम्परेचर के करेक्ट इक्वेशन में साइकिल होना चाहिए, डे लेंथ कितनी है, ज़्यादा धूप से फिशेस पे इफ़ेक्ट होगा, वाटर के कंटेंट कंपोजिशन जो है उस पे इफ़ेक्ट होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन देखना पड़ेगा. And this all factor help
in regulating the rate of function of the entire pound. The producers include the phytoplankton, algae, and other aquatic plants. The consumer are present by the zooplankton, aquatic insects and fish. प्रोड्यूसर्स कौन है? फाइटोप्लैंक्टन और एल्गे है, और जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स है वो है हमारे प्रोड्यूसर. कंज्यूमर कौन है? जूप्लैंक्टन और एक्वेटिक इंसेक्ट और फिशेस जो भी है प्रेजेंट है वो सारे हमारे कंज्यूमर हैं. The decomposers are the fungi, bacteria located at the bottom of the pound. These are the decomposers. Clear with this? Here we completed the example. We understood कि किस तरीके से रेगुलेशन होता है. जो सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट होती है वहाँ पे पहले तो चारों हमारे जो बेसिक प्रोसेस है इकोसिस्टम के वो ऑब्जर्व्ड है. फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का किस तरीके से उनका इंटरेक्शन है. फिर वो हमारे चार प्रोसेस के अलावा भी कौन से अदर फैक्टर्स होने चाहिए. वी अंडरस्टूड व्हाट आर who are producers and who are consumer we have understood, and who will help in decomposition process also we understood. So this example is clearing our mind and we have a correct information about all the terms. Then moving forward, first we will learn about productivity. A constant input of solar energy is the basic requirement of an ecosystem to function and sustain. एक constant input होना चाहिए, मतलब जो हमारी सोलार एनर्जी है वो हमेशा रहनी चाहिए. अगर सोलार एनर्जी रहती है तो सोलार एनर्जी जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑफ फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन. Productivity refer to the rate of generation of biomass in an ecosystem. Productivity क्या refer करती है? To the rate of generation of biomass in an ecosystem. It is expressed in units of mass per unit surface or volume per unit time. For instance, grams per square meter per day. It is expressed in unit of mass per unit surface or volume per unit time. For instance, gram per square meter per day. G by m square by day. The mass unit may relate to the dry matter or to the mass of carbon generated. जो मास क्या होगा? ड्राई मैटर जो है वो, या फिर द मास ऑफ कार्बन जनरेटेड. ये है हमारा मास यूनिट. देन it can be divided into gross primary productivity, जिसे हम लोग GPP करके भी डिनोट कर सकते हैं, एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. हम लोग हमारी प्रोडक्टिविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एक है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसे हम लोग GPP बोलते हैं. दूसरा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसे हम लोग NPP बोलते हैं. सो GPP एक हो गया NPP. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? इट इज़ एन इकोसिस्टम
जिसमें of an ecosystem, gross primary productivity of an ecosystem is the rate of production, is the rate of is the rate of production of organic matter during photosynthesis. Gross primary productivity of an ecosystem क्या है? Is the rate of production of organic matter during photosynthesis. Plants themselves use a considerable portion of this GPP. प्लांट अपने हिसाब से ही GPP को यूज़ करेंगे फॉर देयर रेस्पिरेशन, एक कंसिडरेबल प्रोपोर्शन में यूज़ करके। ऐसे नहीं जितना भी खाना बना दिया उसे पूरा यूज़ कर लिया, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, व्हेन दे मेक दियर फूड, वो लोग बहुत ही कम क्वांटिटी का खाना यूज़ करते हैं। जब वो लोग एनर्जी बनाते हैं, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जब उनका मेटाबॉलिज्म होता है, तो वो लोग बहुत कम एनर्जी यूज़ करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन एंड फॉर द सर्कुलेशन ऑफ वाटर, जिसे हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। एंड जो बाकी की एनर्जी, जिसे हम लोग यहाँ पे GPP डिनोट करें ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के नाम से, वो एनर्जी वो लोग फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में, जो जिसका भी प्लांट है, वो एनर्जी उधर ट्रांसफ़र कर देता है। That's the reason when we eat plant products, we get energy. When we eat fruit, we get various type of vitamins, nutrients. तो वो gross plant का product हमें मिल जा रहा है। Plant thereby use a considerable portion of this GPP for their respiration. Hence, gross primary productivity minus respiratory losses R, respiratory losses को हम लोग R से डिनोट करते हैं, constitute the net primary productivity. Clear with this? जितना भी वो लोग ने फूड जमा किया है, एनर्जी जमा किया है, उसमें से जब उनका रेस्पिरेशन का एनर्जी निकाल दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि उतना ही प्लांट कंज्यूम करेगा, बाकी तो सारा का सारा वो फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में जो भी बना रहा है वो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो उसमें ट्रांसफ़र करेगा। तभी हमें NPP का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, GPP को R से माइनस कर देंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन का हम लोग ने GPP जो क्या है, वो पूरी एनर्जी जो वो कंज्यूम बना रहा है वो, तो पूरी एनर्जी में से सिर्फ रेस्पिरेशन की एनर्जी को माइनस कर देंगे, तो डेफिनेटली वी विल गेट द NPP। क्लियर विद दिस स्टूडेंट्स? ये है हमारी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स क्या है? हर्बीवायरस, कार्निवायरस एंड डिकम्पोजर्स। The annual net primary productivity of the whole biosphere, annual net, year की बात कर रहे हैं हम लोग, annual NPP of the whole biosphere is approximately 170 billion tons, that is dry weight of organic weight matter। अगर एनुअल NPP लेंगे पूरे बायोस्फीयर का, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 170 मिलियन ड्राई वेट रहता है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की बात करें हम लोग सिर्फ। ऑफ दिस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशन इज़ ओनली 55 बिलियन टोन्स। ओशन की ही प्रोडक्टिविटी 55 बिलियन टोन्स है। रेस्ट ऑफ कोर्स इज़ द लैंड बेस्ड प्रोडक्ट इकोसिस्टम। जो बाकी की बची हुई है वो है हमारी लैंड की प्रोडक्टिविटी। तो NPP क्या है? इज़ द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू हेट्रोट्रॉप्स। जो भी वो लोग खाते हैं हेट्रोट्रॉप्स, वो है NPP। जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अभी बताया। तो एनुअल नेट NPP कितनी है?
170 बिलियन टोन्स, उसमें से सिर्फ ओशियन की 55 बिलियन टोन्स है, रेस्ट ऑफ कोर्स इज फ्रॉम लैंड बेस्ड इकोसिस्टम. Then primary productivity, that is GPP, depends on the plant species inhabiting a particular area. It also depends on the variety of environmental factors. GPP depend on the plant species एक particular area का. It also depend on the variety of environmental factor, availability of the nutrient, photosynthetic capacity of plant. Therefore, it varies in different types of ecosystem. Secondary productivity is defined as the rate of formation of new organic matter by consumer. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कैसे डिफाइन करते हैं? एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर. अल्टरनेटिवली, it is the rate of assimilation of food energy at the level of consumer. It is the amount of energy available to consumer for transfer to the next tropic level. What it is the amount of energy. कितना amount of energy consumer के पास available है. For what? For the transfer to the next tropic level. ये है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. अभी तक हम लोग ने प्राइमरी के बारे में पढ़े, सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़े. प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी एक लेवल है, वो है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. So we are clear with this. So students, we will end this video here. In the next part of the video, we will start with the decomposition. Thank you.